How can a chartered accountant send return filing reminders to his or her client? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे अपने क्लाइंट्स को जो रिटर्न फाइलिंग के रिमाइंडर्स हैं वो भेज सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग आवर्स? लेट्स चेक इट आउट. Hi there, I'm Kewal Kishan, India's leading business automation coach. And past 8 years, I've been helping manufacturers, traders, even service providers like chartered accountants, insurance providers, and financial planners to automate their entire business using Google Form sheets and WhatsApp automation. So let's start this lesson and let's understand कि कैसे एक chartered accountant automatically remind करा सकते हैं अपने clients को for return filings. So to explain you the same, I have created a small PPT around it where we shall discuss this topic in detail. Make sure you have a notebook and a pen and you start making the notes as well. So पहले तो ये समझते हैं कि आपको एक reminder system required क्यों है. I remember when I started my entrepreneurship journey and एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मैंने कनेक्ट किया कि मुझे आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है. तो जब भी कोई रिमाइंडर उन्हें मुझे कराना होता था, चाहे वो सर्विस टैक्स का रिमाइंडर है, बिकॉज पहले सर्विस टैक्स होता था एंड रिसेंटली फ्यू इयर्स बैक जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ, बट इनिशियल इयर्स इट यूज्ड टू बी सर्विस टैक्स. एंड एट दैट टाइम 2012-13 तब तो बैक टू बैक हर मंथ बेसिस पे चीज़ें सबमिट नहीं करनी होती थी. इट यूज्ड टू बी ईयरली फाइलिंग और 6 months फाइलिंग. बट नाउ डेज यू नीड टू deposit your GST, you need to deposit your tax of yours and of your employees, and because of which जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनका जो काम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उनका चला जाता है, वेस्ट हो जाता है अपने क्लाइंट्स को रिमाइंड कराने में. सो व्हाई यू नीड अ ऑटोमेटिक रिमाइंडर सिस्टम? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट you need all the documents information on time. और जब एक लास्ट डेट आती है और आप रिमाइंड कराते हो और क्लाइंट लास्ट डेट पे बोलता है कि मुझे अभी सबमिट करना है, मुझे डिटेल जल्दी से जल्दी भेजो. सो अगेन एक हाहाकार मच जाता है पूरे के ऑफिस में कि अरे इस क्लाइंट को ये भेजना है, उस क्लाइंट को वो भेजना है. एंड क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स इवन दे डू नॉट सबमिट द टैक्स ऑन टाइम. और उससे क्या होता है, लेट फाइलिंग होती है तो पेनल्टीज लगती हैं और टैक्स लगता है एक्स्ट्रा. एंड देन क्लाइंट फील्स कि यार ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझे अच्छे से रिमाइंड नहीं कराया. चार्टर्ड अकाउंटेंट तो पूरा एफर्ट डाला रिमाइंड कराने में, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें मिस हो गई. और बैक टू बैक कॉलिंग लगती है और टू रिमाइंड द क्लाइंट्स, और वो कहीं ना कहीं क्लाइंट को भी इरिटेट करता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी लगता है कि क्या मैं कॉल सेंटर बन के रह गया हूँ. और एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप अपना जो नॉलेज है वो उस पर फोकस नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम इन फॉलोअप्स. और आपके जो अंडर योर बिजनेस जो आर्टिकल्स हैं राइट, उनका भी मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलोअप्स में चला जाता है. So you and your team is just performing the repetitive and clerical activities. और एक हर टाइम लास्ट मिनट रश होता है, स्पेशली जो 7th डेट है जब आपको टैक्स डिपॉजिट कराना होता है अपने क्लाइंट्स का. एंड ना चाहते हुए भी कभी मेंटल पीस नहीं आ पाता, हमेशा चीज़ें डिस्टर्ब रहती हैं, राइट? So comment below right now on how many hours you waste every week in manual follow-ups from your clients. If you're a chartered accountant, tell me the number of hours you waste. Or if you're not a chartered accountant, इफ यूर अ बिजनेस ओनर, कितना टाइम आप अपने पेमेंट फॉलोअप्स में वेस्ट कर देते हो, अपने टीम को जब कुछ काम देते हो उनसे फॉलोअप करने में कितना टाइम आपका वेस्ट होता है. बिकॉज अंटिल अनलेस वी रियलाइज दैट देयर इज अ गैप वी कैन नॉट फिल इट, राइट? नाउ हियर आई विल शो यू वन ऑटोमेटेड रिमाइंडर टूल थ्रू विच आप अपने क्लाइंट्स को रिमाइंडर्स भेज सकते हो. स्पेशली दिस कैन बी यूज्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू सेंड द रिन्यूअल द टैक्स deposit reminders to their clients. Now, using this tool, automatically email and WhatsApp can go to the clients according to the due dates. And these emails and WhatsApp messages can be customized according to your business with your brand name and with the company client's detail as well. And along with that, email and WhatsApp पे PDF भी जा सकता है, which can have some calculation or some details of it. एंड दीज रिमाइंडर्स यू कैन स्केड्यूल. फॉर एग्जाम्पल अगर आज डेडलाइन है तो आज डेडलाइन से 7 दिन पहले एक मैसेज मुझे क्लाइंट को भेजना है, एक मैसेज 4 दिन पहले, एक मैसेज 2 दिन पहले और एक मैसेज लास्ट डे पे भेजना है. एंड यू कैन कस्टमाइज दिस स्केड्यूल एज वेल एज पर योर रिक्वायरमेंट. सो लेट्स सी ऑन हाउ दिस automatic reminder tool work. So this is where I'll show you on how this system work. You can see a Google Sheet based tool around it.
राइट, विच हैज वन शीट विच इज कॉल्ड डेटा। और डेटा में क्या है, यहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स का डिटेल फिल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ केवल इफ आई एम योर क्लाइंट, तो आपने मेरा नाम लिखा, ईमेल एड्रेस लिखा, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, एंड हियर यू राइट अ ड्यू डेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जीएसटी फाइलिंग का रिमाइंडर भेज रहे हैं, या फिर हम अपने क्लाइंट्स को और टीडीएस लाइक टैक्स डिपॉजिट का रिमाइंडर भेजना है, दिस इज वेयर यू कैन ऐड अ लिंक, जहाँ पे कोई पीडीएफ है या कोई गूगल शीट है जहाँ पे आपने कुछ कैलकुलेशन की हुई है और उसका लिंक भी आप क्लाइंट को भेजना चाहते हो। हेयर यू वांट टू सेंड द अमाउंट, ये कितना अमाउंट डिपॉजिट कराना है। हेयर यू कैन ऐड द यूजर नेम एंड द पासवर्ड, बिकॉज इंडिया में मोस्ट क्लाइंट्स दे डोंट इवन रिमेंबर देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड ऑफ द पोर्टल जहाँ पे उन्होंने टैक्स डिपॉजिट करना है। हमेशा वो सारे यूजर नेम चार्टर्ड अकाउंटेंट को याद होते हैं। सो इवन यू कैन सेंड दिस, या आपको कोई और डिटेल शेयर करनी है तो इस पर्टिकुलर फील्ड को आप कोई और वेरिएबल की तरह भी यूज कर सकते हैं, एंड यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एंड हियर यू कैन इवन ऐड द पेमेंट लिंक, या फिर और वेरिएबल्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो व्हाट विल हैपन, जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका डेटा आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, अपने टीममेट को बोला, उन्होंने अमाउंट ऐड कर दिया, यूजर ने पासवर्ड ऐड कर दिए, और एक बार आपने डेटा फीड किया, उसके बाद अब टाइम आता है अपने रिमाइंडर्स को क्रिएट करने का। सो रिमाइंडर्स के लिए दिस इज अ शीट कॉल्ड सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में आप देख रहे होगे यहाँ पे -14 लगा है। -14 मीन्स ड्यू डेट, जो लास्ट डेट है टैक्स फाइलिंग की या टैक्स डिपॉजिट की, उससे 14 डेज पहले ये मैसेज चला जाएगा। अब वो लास्ट डेट कहां पे आ रही है, इट इज कमिंग हियर। हियर दिस इज वेयर यू कैन डिफाइन, फॉर एग्जांपल जस्ट 7th एक डेट है जहां पे लास्ट डेट होता है टीडीएस फाइलिंग का या टीडीएस डिपॉजिट का। So here you can define, okay, TDS 7th is the date, and it can go even automatically every month, right, without you setting it for each and every month individually, right? It can be defined as monthly KRAs, जहाँ पे हर month आपके clients को reminders जा रहे हैं। So you choose 7th as a date, and here 14 days before this message will go, which says dear name. So name is getting picked from this sheet, एंड क्लाइंट का नेम ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाता है। सो लाइक डियर केवल, डियर राजेश, डियर संजय, डियर अमित, सो ऑटोमेटिकली कंपनी या उस कस्टमर का नाम यहाँ पे पिकअप हो जाएगा। प्लीज डिपॉजिट द टैक्स अमाउंटिंग टू दिस मच अमाउंट। अब अमाउंट भी आपने डिफाइन किया हुआ है, यू हैव डन द कैलकुलेशन फॉर योर क्लाइंट, सो वो यहाँ से अमाउंट पिकअप हो जाएगा। देन हियर इट सेज लास्ट डेट इज दिस, सो ड्यू डेट इज गेटिंग पिक्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉलम. And along with that, you can see here, then log into this portal, okay, with your username this and your password this. And it says only 14 days are left. So here client gets a message and email के 14 दिन बचे हैं और आपको और आपके स्टाफ को कॉल नहीं करना पड़ा। चांसेस है कि उस मैसेज को देख के he or she can see the detail and can file the tax on time, and it save the client's time and your time, and things get done without a last minute rush. Here you can even write this message that you can call us at this number for any clarity, or you can directly view the calculation in this sheet. तो कोई गूगल शीट पे आपने कुछ कैलकुलेशन की हुई है या कोई पीडीएफ में की हुई है, वो पीडीएफ आप अपने गूगल ड्राइव में अपलोड करके उसका लिंक आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नाउ यू माइट बी वंडरिंग, केवल ये मैसेज तो ठीक है, बट ये व्हाट्सएप पे कैसे जाएगा और ये ईमेल पे कैसे जाएगा? सो व्हेन इट कम्स टू जीमेल, अगर आप जीमेल या जी सूट यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली ये मैसेज गूगल के थ्रू, शीट के थ्रू इंटीग्रेट होके जीमेल पे चला जाता है। एंड अलॉन्ग विद दैट, व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप पे वी प्रोवाइड अ कंप्लीट व्हाट्सएप एपीआई ऑटोमेशन सोल्यूशन, राइट, जहां पे आप या आपके किसी टीममेट के नंबर से आपको व्हाट्सएप भेजना है। सो यू स्कैन अ कोड हियर विद योर मोबाइल एंड आपको एक इसका व्हाट्सएप एपीआई मिल जाता है। वो व्हाट्सएप का एपीआई आप यहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एंड हियर यू डिफाइन कि ईमेल भेजना है क्लाइंट को, येस और नो, व्हाट्सएप भेजना है, येस और नो। और जैसे ही यहाँ पे व्हाट्सएप एपीआई सेटअप करते हैं और यहाँ पे आपने सीक्वेंस डिफाइन कर दिया, 14 डेज पहले क्या मैसेज जाना है डेडलाइन के, 7 डेज पहले क्या मैसेज जाना है उस पर्टिकुलर टैक्स डिपॉजिट लास्ट डेट के, 2 डेज पहले क्या जाना है, 1 डे पहले क्या जाना है, एंड यू गो टू दिस शीट एंड यू क्रिएट अ ट्रिगर। जैसे आप ट्रिगर क्रिएट करते हैं, ऑटोमेटिकली इन क्लाइंट्स को मैसेजेस जाने लगते हैं। सो ये आपका ड्रिप रिमाइंडर सिस्टम बन गया, जिसमें 14 दिन पहले, 7 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले मैसेजेस जाने लगते हैं। एंड यू हैव फ्री विल कि आपको इसमें मैसेज क्या डिफाइन करने हैं। सो एग्जाम्पल, यही मैसेज को नीचे कॉपी किया और 14 डेज की जगह 7 डेज लिख दिया, और यही मैसेज को नीचे कॉपी किया तो 2 डेज लिख दिया, एंड देन 1 डे लिख दिया कि टुमारो इज द लास्ट डे। और हेयर 0 मीन्स
जीरो मीन्स के ड्यू डेट, जो लास्ट डेट होगी ना उस डे पे ये मैसेज आएगा दैट प्लीज डिपॉजिट, टुडे इज द लास्ट डेट, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर कोई क्लाइंट डिपॉजिट कर देता है टैक्स बिफोर द ड्यू डेट, सो देयर इज अ सिस्टम थ्रू विच यू कैन डिसेबल कि उस क्लाइंट को बाकी के मैसेजेस ना जाए, सो दैट उसका स्टेटस डन हो जाए कि उन्होंने अपना टैक्स डिपॉजिट कर दिया है ऑन टाइम। Now, through this simple system, our students, chartered accountants, they are able to send the reminders for the tax deposits. The insurance policy, experts, they are able to send policy reminders to their clients. The financial planners, they are able to send financial planning, reminders. और एक जो general business owners हैं, वो अपनी payment के reminders भेज पा रहे हैं clients को, right? So if you're an entrepreneur, system like this can make your life really easy. So let's discover कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जब आप ऐसी प्रोसेसेस को गूगल शीट फॉर्म और व्हाट्सएप के थ्रू ऑटोमेट करते हैं। Now, before I go through these benefits, I want you to click on the subscribe button, because every week we are coming with giving you tons of value through these value videos. And the least which I can ask from you is a subscribe. So click on subscribe and click on the bell icon as well, so that every week I keep adding value in your business to upgrade you as well. So let's go back and check on the benefits that a chartered accountant gets when he or she automates the reminders, right? So the chartered accountant can save tons of hours of his or her and of the staff as well. Otherwise, सारा टाइम ऐसे क्लरिकल एक्टिविटीज में जा सकता है which results to frustration and no profit and no growth. यूजुअली क्या होता है, आपके पास 5 या 10 या 15 क्लाइंट हैं और आप उन्हीं को ही मैनेज नहीं कर पा रहे हो। व्हाई? बिकॉज वही टाइम से टैक्स डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं और आपका सारा टाइम, सारा एनर्जी उन क्लाइंट्स को मैनेज करने में चला जाता है। बट अगर आप ये प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो, व्हाट विल हैपन, यू विल बी एबल टू हैंडल 10 टाइम्स मोर क्लाइंट्स विद सेम नंबर ऑफ रिसोर्सेज, and it help you save late filing fees, right? So you save clients amount, clients money and penalties, and which make your clients happy. And when clients are happy, what happens, they become loyal and they spread the word about you being the expert in your industry. क्लाइंट से रेफरल्स कब आते हैं? जब क्लाइंट को लगता है कि आप अपने बिजनेस में एक्सपर्ट हैं। और एक्सपर्टीज बस नॉलेज से नहीं आती है, जिस तरीके से आप उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आती है। जब हम अमेजोन से कुछ खरीदते हैं तो अमेजोन हमें रिमाइंड कराता है कि आज आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी होनी है, योर प्रोडक्ट हैज बीन शिप्ड, योर प्रोडक्ट हैज बीन डिलीवर्ड। सो ये जो हमें कम्युनिकेशन हो रहा है उससे हमें पता है कि हम अपने प्रोडक्ट रिसीव कर लेंगे और कुछ मिसकम्युनिकेशन नहीं होता है और प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर होता है और अमेजोन को कैश ऑन डिलीवरी में पेमेंट हो जाती है, राइट। बट इमेजिन अगर अमेजोन हमें कुछ रिमाइंडर्स ना भेजे, सो वी हमें पता नहीं प्रोडक्ट कब आना है और जब कोई डिलीवरी गाय कॉल करेगा हम कहीं और होंगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। बट हम अपने बिजनेस में सब कुछ मैनुअल कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच वी आर फेसिंग द चैलेंजेस। और जब क्लाइंट्स हैप्पी हैं, व्हाट हैपेंस, क्लाइंट गिव यू टन्स ऑफ रेफरल्स, सो यू जनरेट टन्स ऑफ रेफरल्स फॉर योर बिजनेस एंड यू ग्रो, एंड एट द एंड यू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस, जहां पे जो 8-10 घंटे आप काम करते हो, अभी 50% टाइम टीम से फॉलोअप लेने में या क्लाइंट से फॉलोअप लेने में जाता है। नाउ यू सेव ऑल दैट टाइम। So I hope this video add the value in your life on how you can get the freedom from giving the reminders to your clients. Share this video with your fellow chartered accountants and make their life easy. And share with other business owners as well who are struggling on taking the manual follow-ups from their clients for the pending payments, or the business owners who waste half of their day on taking the manual follow-ups from their staff जो भी उन्होंने काम दिया होता है। With that, I'm wrapping up this lesson. I'll see you next week with another awesome YouTube video. And before that, make sure you subscribe to the channel and click the bell icon as well. And if you're a business owner, this week I'm conducting a special live business automation workshop for you to upgrade and automate your business with simple Google Form, Google Sheet and WhatsApp automation. So description में एक बार जाइए, check out the link and sign up for a complimentary workshop which usually is paid, but right now this week I'm doing it complimentary, and go ahead and start automating your business, because without systems, without these automation systems, if you're running a business, it's like running a car without engine. Right? So with that, signing off, Kewal Kishan, India's leading business automation coach, helping you automate and scale your business. Thank you so much.